Hello students, welcome to Capman Academy. I am Dr. Krisha and our today's topic is food microbiology, in which we are going to discuss about the yeast and mold, right? So in our last class we actually discussed about the bacterial morphology. I hope आपको वो सबसे अच्छे समझ में आ गया होगा. If you have any doubt आप वो हमें कमेंट्स में या फिर उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है उससे रिलेटेड. So our today's topic is yeast and mold, in which we will discuss about its size and arrangements, right? And why it is actually important to discuss, because yeast and mold in fact are food products very much. So it is important to study their structure and arrangements, because most of the foodstuffs actually get very easily infected with the yeast and mold. So first we will actually discuss about the yeast. So first we should know about that yeast and mold, actually these are fungi, right? These are types of fungi and they both can infect the foodstuff one by one, or they both can be associated with each other and can cause the infection and diseases in your final food product. If there is a contamination of yeast and mold present in the food products, then they can cause infections, and that infections, when we consume them, the humans will consume that type of food, they can cause different type of diseases, right? So first let's see about the yeast. So in the picture here I had shown you yeast picture, so you should know about its important properties. So yeast, number one, it is a single cell structure, and the second property is it reproduce asexually by बडिंग प्रोसेस. इसमें क्या होती है? बडिंग होती है, और जो एक असेक्सुअल प्रोसेस है. फाइन. और इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट का एग्जाम्पल कैंडिडा एल्बिकन्स एंड क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स. क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, ये दो टाइप की हमारी ईस्ट है जो एक्चुअल में डिजीजेस कॉज करती है. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है वो है कि ईस्ट में एक स्पीशीज होती है ईस्ट की, उसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, और उसका नाम है सैक्रोमाइसिस cerevisiae. So you should know that Saccharomyces cerevisiae, actually it is one of the species of yeast which is used in the baking processes. So it is very famous in the bakers, so that is why it is called baker's yeast, right? Now let's see how the yeast cells actually reproduce by budding process. So what happens, that has some stages during the budding formation. So first stage comes, which is blastoconidia formation, which means where the cell has to produce a bud, there a blastoconidia will be present, it will form there, and then second thing, bud starts to emerge at that blastoconidial formation. Third stage comes, in which bud grows properly. वो अपना फुल टाइम लेती है, फुल टाइम प्रॉपरली ग्रो होने के लिए. एंड देन इन द लास्ट व्हाट हैपन्स, दिस बर्ड व्हेन इट ग्रोज प्रॉपरली, इट डिटैचेस फ्रॉम द मदर सेल, So this type of budding happens in the yeast cells, in which first thing is the blastoconidia formation, second comes the bud starts to emerge properly, and that bud then grow properly in the proper formation it takes,
and then in the last it detaches from the mother cell and grow on itself, right? And how this yeast actually is distinguished from the other fungi, it has some properties, we should know about that too. So its first property is, number one, in the yeast there is a presence or absence of capsules. In some of the single cell yeast cells there can be a capsule or it cannot be there, right? Second property is size and shape of the cells vary. Shape of the cell varies. And third thing is conidiogenesis, how the daughter cells actually formed. Daughter cells formation, that also different from other fungi. And then fourth things comes, yeast cells have pseudohyphae, which means the hyphae actually are the part of the fungi which helps in the uptake of the nutrition from the food products. So they have they are actually a filamentous structure, or you can say the tube like structures, fine. So in the yeast cells they have pseudo like hyphae, which means they are not actually hyphal structures, they would be like this, then this, and it can be like this and this one, and they will start budding anywhere in this formation. So like this, yeast cells have pseudohyphae and they buds from their cells, right? And then in some of the yeast cells they also have true hyphal formation. So here what is the actual function of the hyphal here is, in both of the cases they help in the uptake of nutrients from the food products. Why? Because food stuff actually they are the major energy source for the yeast to grow. So that is why it depends on the food products, and whenever it got the chance to grow, it starts to grow there whenever the environment is favorable for the yeast cells to grow, right? So these hyphal formation, you should know about the hyphal function. Its actual role is uptake of the nutrients from the food products. So this kind of question can be asked, right? So in the yeast we studied about its properties. Number one, it is single cell structures like this, they exist in single cell and they reproduce by asexually, which is called budding process. And we studied the budding process, how the buds actually grow and how they detach to the mother cells. And then we saw that how these yeast cells actually differentiated from the other yeast cells or other fungi. So there can be presence of the capsules, like this is your yeast cells, then there could be a capsule formation around its structure, or there is a chance that there is no capsule present at all there, right? And also their shape and size also varies from species to species. हो सकता है एक में फंजाई का स्ट्रक्चर ऐसा है तो एक में ऐसा होगा, किसी में और तरीके का होगा, राइट? सो सेल स्ट्रक्चर भी क्या होता है, ईस्ट का वेरी करता है. इसकी डॉटर सेल फॉर्मेशन जो होती है वो भी डिफरेंट होती है. It has pseudo hyphae and true hyphal structure which actually helps in the uptake of the nutrients from the foodstuffs, right? So ये था हमारा किसके बारे में, ईस्ट के बारे में. अब हम नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं मोल्ड के बारे में. मोल्ड क्या होता है एक्चुअली? सो सी हेयर in this picture, this is the bread picture, the bread we usually eat in our houses. So it is all has been covered with the mold fungi. It is infected with the mold, and the mold are different. There are different type of molds are present. So they can be black in color, they can be green in color, they can be green in color, and then they can be white in color, right? So this is how the mold actually it infects the plant products. And in the upper image it has both
mold plus yeast in the food stuff. So I told you mold and yeast can infect the food products together, and they can also infect the food products one by one or individually, right? So mold actually, it is a how it is different from the yeast cells. Number one property comes, it is a multicellular structure, which means it has more than one cell. Second, it reproduces in both way. It can be bisexually or asexually. So that is the major difference in the mold and yeast cells, right? And it contains, third, it contains filaments like structures, which called hyphae, which are hyphal structures actually, and their optimum temperature to grow is 25 degrees centigrade. So at this temperature they are very prone to grow. That is a favorable temperature to grow for the mold, right? And how it is actually differentiated from the other fungi? So that depends on the number one, conidiogenesis. Second thing, conidiophore structure, that also varies. And third, conidiogenous cells, राइट। अब एक्सप्लेन करते हैं कॉनिडियोजेनेसिस क्या होती है। कॉनिडियोजेनेसिस जिसमें स्पोर्स जो होते हैं एक्चुअली जो गैमीट्स बनते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक लेके। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो क्या होती है, वेरी करती है फ्रॉम डिफरेंट मोल्ड में, एक मोल्ड से दूसरे मोल्ड में कॉनिडियोजेनेसिस जो होती है वो वेरी करती है, राइट। सेकेंड थिंग आती है कॉनिडियोफोर्स। कॉनिडियोफोर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में कॉनिडियोफोर प्रेजेंट नहीं है, बट देयर आर अदर फंजाई विच एक्चुअली एट देयर टॉप हैव दिस like this structure, and then there is another conidiophore structure, and here it starts to conidioformation. So these are the conidio and these are the conidiophore which actually hold the conidio, right? And this all process is called conidiogenesis because ultimately these spores has to release from the structures. So these are called conidios, right? And also in some of the fungi, for example in this picture, this tube like structure, it is called sporangiophore. Why? Because it contains spores on the top of it, right? And it is connected to each other with the help of these stolon structures, and it also contains hyphae in its structure which actually helps in the food nutrition uptake. And this structure, chain like structures which spreads in all the food stuff, this is called mycelium. This is the hyphal structures, secondary structures. So this is called feeding mycelium which actually feed on the food products and take everything from the food stuff, every nutrition from the food stuff, right? So here in this fungi there are no conidiophore, it is different from the other fungi. Conidiogenous cells are also different. Conidiogenous cells are sac like structures. These are sac like structures, and in the sac like structures these are called sporangium. When these sporangium are ruptured, they release the spores into the environment, and in the environment then they infect other food products and there starts to grow. So these spores are actually the gametes. These spores are gametes, right? So this is how they actually infect the food products. Fine. So I guess आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मोल्ड के बारे में इतना काफ़ी है, आपको उसके प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि मोल्ड में एक्चुअली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि इसमें मल्टीपल सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
अब ये जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ भी पार्टीशन नहीं है, राइट, तो इसलिए ये असेप्टेट माना जाएगा, ये स्पोरेंजियोफोर। बट इन सम ऑफ द केसेस क्या होता है, वहाँ पे पार्टीशन प्रेजेंट होता है और उसको बोला जाता है सेप्टेट। जो जहाँ पे क्या होता है, पार्टीशन होता है, उनको बोलते हैं हाइफेको सेप्टेट, और जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है उनको असेप्टेट बोलते हैं, राइट। और जिसमें ये जो इसका जो सेपरेशन होती है इन सेल्स की, उसमें अगर क्या ना हो, अगर वो अलाइन ना हो या फिर यूनिफॉर्मली वो सेप्टेट ना हो, तो उनको बोला जाता है स्यूडो हाइफे। स्यूडो हाइफे जो हमने कहाँ पे देखे, हमने देखे ईस्ट सेल्स में, उनमें प्रेजेंट होते हैं। फाइन, तो इसमें क्या होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हाइफे के बारे में होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाइफे का रोल क्या होता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए हाइफे का एक्चुअली मेन रोल क्या है, कि ये फूड प्रोडक्ट से न्यूट्रिएंट अपटेक करता है। सेकंड क्वेश्चन, इट कैन कम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, कौन सा सिंगल सेल है और कौन सा मल्टी सेलुलर है। देन अनदर क्वेश्चन कैन कम्स फ्रॉम देयर रिप्रोडक्शन, हाउ दे एक्चुअली रिप्रोड्यूस। सो जो हमारे मोल्ड सेल्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और उस प्रोसेस को बडिंग प्रोसेस बोलते हैं। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर द ईस्ट एंड मोल्ड। अब इसमें कुछ और टर्म्स आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में, गेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आती है हमारी वेजिटेटिव सेल्स, एंड सेकंड आती है स्पोर सेल्स। सो आपको इनके बीच में डिफरेंस एक्चुअली पता होना चाहिए, व्हाट आर द स्पोर सेल्स एंड व्हाट आर द वेजिटेटिव सेल्स। सो इन द वेजिटेटिव सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, they do not produce gametes, whereas जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, विच मीन्स ये क्या करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन होती है इसमें। एंड इसकी एक और खासियत क्या होती है कि ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये बहुत क्या होते हैं, उनके लिए रेजिस्ट करते हैं, और वहाँ पे अगर जब तक इनका फेवरेबल इन्वायरमेंट इनको नहीं मिलता है, वहाँ पे ये इजीली किल नहीं होते हैं, आराम से वहाँ पे वेट करते रहते हैं, और जैसे ही इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो होने के लिए, ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इनको किल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज ये स्पोर्स जो हैं बहुत ईजीली क्या नहीं होते हैं, डाई नहीं होते हैं। सो इनका जो मेन खास होती है स्पोर्स की, नंबर 1 दे आर डॉर्मेंट, एंड सेकेंड थिंग दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशंस। फाइन, उसके बाद जो हमारे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ये फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, एल्गी में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड देन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। और ये जो होते हैं, थर्ड थिंग, ये असेक्सुअली क्या किए जाते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। सेम वे जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ये इनमें सिमिलैरिटी है। और इनकी जो प्रेजेंस होती है सेल्स में वो फंजाई में भी होती है, सेम एज वेजिटेटिव सेल, एल्गी में भी होती है, एंड प्रोकैरियोट्स में भी होती है। फाइन, फिर उसके बाद आ जाता है कि सोमैटिक सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो एक्चुअली दीज वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं ये काइंड ऑफ सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये प्रेजेंट होते हैं फंजाई में, एल्गी में, एंड प्रोकैरियोट्स में। बट जो स्पोर्स होते हैं ये जो होते हैं ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती है, एब्सेंट होते हैं, वेयर एज वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फाइन, उसके बाद अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जो हमने फंजाई में अभी अभी पढ़ा। फॉर एग्जांपल
अगर हाइफे को कंसीडर किया जाए, जो हाइफल फॉर्मेशंस हमने पढ़ी, वो एक वेजिटेटिव सेल है, एंड जो स्पोर्स होते हैं और जिनको गैमीट्स बोलते हैं, वो एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स हैं, फाइन, जो क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है टू अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि स्पोर्स एक्चुअली किस टाइप के सेल्स होते हैं एंड वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं किस टाइप से होते हैं। सो एक्चुअल में जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो जो स्पोर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक वेजिटेटिव सेल है तो आफ्टर सम टाइम इन अ प्रोसेस इसमें क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाएगी, स्पोर यहाँ प्रॉपरली ग्रो करेगा, मेच्योर करेगा, एंड इन द एंड स्टेप क्या होगा, स्पोर अलग हो जाता है एंड वेजिटेटिव सेल्स फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फ्री हो जाएगा। फाइन, तो ये हमारा स्पोर होता है और इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन, राइट। तो जो स्पोर होता है वो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता होनी चाहिए। सो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू।